My dear students, in this video I will tell you about the other types of the function in which you can find the domain and range. For example, this is the question fx is equal to under root x square minus 4. In the previous video, I had told already about the linear expression, means x minus 4 may be 4 minus x may be inside the under root. Also the quadratic equation, but this is the quadratic one but inside the under root. So how to find the domain and range of such type of functions? For this, for domain, as you know, the fx must be the real number because no infinity should be there, means x की कोई भी वैल्यू ऐसी रखें जिसमें कि ये अगर इन्फिनिटी आ जाए या नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी वैल्यू. Not defined means infinity, imaginary value means if you get the negative sign inside the under root, then it is not considered as the domain, real number. So for real number, what you will take the condition? Condition is inside the under root the value should be greater than or equal to 0. So x square minus 4 is greater than or equal to 0. In this case, you will factorize, that is greater than or equal to 0, and then use the concept x minus a into x minus b greater than or equal to 0 where a is less than b. In this case, the x lies between, in this case, the x is greater than b or x is less than or equal to a if a is less than b. So you have the x means domain of the function. In this case, the domain means x lies greater than 2 or x less than or equal to minus 2. If you want to write in the bracket form, so domain will be minus infinity to minus 2, and this is the big bracket because equal sign is there. Then union, this r means union, and one more big bracket, then 2 to infinity because greater than or equal to 2. So this is the domain of the function. But how to find the range? For range, what you have to do in this case? For range, as you know, this is y. So y is equal to under root x square minus 4. And because this is the greater than or equal to 0, therefore y is also greater than or equal to any square root of the number that should be greater than or equal to 0. So where y is greater than or equal to 0. In this case, if it is greater than or equal to 0 means the y is where x square minus 4. If you take the square both the sides, so what you will get? Y square is equal to x square minus 4, and then you can find that x square is equal to y square plus 4. After finding this, you can see that is x square always positive, x square always positive, so y square plus 4 is also always positive and greater than 0. Can you say the y square is greater than or equal to minus 4? क्या ये possible है? No, it is not possible because when you take the under root, means this cannot be factorized, means when you take the under root it will give the negative sign, means imaginary number. So that is why all the real value, you can say the all real value which is greater than 0. Why it is greater than 0? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है कि y is greater than or equal to 0. तो हम यहाँ पे लिखेंगे all the real value, but the range will be 0 to infinity. ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि y is greater than or equal to 0, that is considered as the in the first case. तो हम इसके नीचे नहीं ले सकते, इसके नीचे लेंगे तो that will not be satisfied. This is the first example.
Now the second example, how to find the square root. If for domain and range, if you have fx is equal to 16 minus x square अंडर रूट, अभी वहां पे x स्क्वायर माइनस था, अब यहाँ नेगेटिव में x स्क्वायर हो गए हैं, तो इसको कैसे हम कंसिडर करेंगे डोमेन के लिए? डोमेन के लिए दैट इज द सेम थिंग, फॉर डोमेन fx must be a real number या वैल्यू। तो ये रियल वैल्यू तभी होगी जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई, बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूज द रूल ऑफ इनइक्वेशन व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव साइन। सो इट विल बी x minus 4 and x plus 4 is less than or equal to 0. I have told already in the previous video the rule, if x minus a, x plus x minus b is less than or equal to 0, where a is less than b. In this case, x lies between b and a. This is the rule. According to this rule, we can find the value of x. It means the x lies between 4 and minus 4. This is the domain. So domain will be minus 4 to 4. This is the domain of the function. After finding the domain, you have to find the range. अब रेंज के लिए कैसे करेंगे? रेंज भी वही चीज है, फॉर रेंज उसी तरह से निकालना है। फॉर रेंज, as you know, y is under root 16 minus x square, but this is the positive number inside the under root. Therefore, y is greater than or equal to 0, because 16 minus and square root of any that is the number of any real value that gives the positive value. So y is greater than or equal to 0, and then take the square of both the sides. This equation, y square is equal to 16 minus x square. तो x square will be 16 minus x square यहाँ पे, y square उधर y square. Then you have to take this 16 minus y square, because it is always greater than 0. तो x square is greater than or equal to 0. So 16 minus y square is also greater than or equal to 0. Now again use the same method, is less than or equal to 0. So what you will have? Y minus 4 and y plus 4 is less than or equal to 0. In this case, if you apply the same rule, so what you will get? The y lies between 4 and minus 4. But already said that y is greater than or equal to 0. इसका मतलब कि y 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो नेगेटिव क्वांटिटी you will not take. Therefore, the range will be 0 to 4. This is the answer. So by this way you can find the value of range and value of domain. Then the next one, if you have the square root in denominator, then what you will get? This is, for example, third time fx is equal to 1 upon under root 9 minus x square. In this case, what you will get? You will have the again the real number, real value वो सबको निकालना है कि real value होना चाहिए for domain. So for domain fx must be a real value. अब रियल वैल्यू होना है, अभी जैसे हमने लिखा था 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या 0 आ सकता है डिनोमिनेटर में? इफ इन डिनोमिनेटर 0 इज देयर, सो इट गिव्स द इंफिनिटी, मींस नॉट डिफाइंड. तो सिर्फ 0 हटा देना है, द 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाकी वही रखना है, इज ग्रेटर देन 0 से. तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0. तो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0. नाउ सेम रूल यू अप्लाई, तो लेस देन है तो यहां पे x लाइज बिटवीन -3 to 3, जो वैल्यू आएगी x की वो इसमें रख देंगे. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज
अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखे तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि इक्वल साइन नहीं है. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. आफ्टर फाइंडिंग द डोमेन यू कैन फाइंड द range. Now for range, how to find the range? Range is very easy. In the same case you have to apply the same thing in for the range also, as y, because y is 1 upon under root of 9 minus x square, and this is the greater than or equal to 0, so y should be also the greater than or equal to 0. So in this case it should be the non-negative number. So for real value this is greater than or equal to 0, तो y भी क्या होगा, greater than 0 होगा. तो y अगर greater than 0 है, तो दोनों तरफ हम एक ये कंडीशन हो गई हमारे पास में, तो y स्क्वायर ले, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 1 upon 9 minus x square, and then take the cross multiplication. After cross multiplication, what you will get? 9y square minus x square y square is equal to 1. So write x square y square is equal to 1 minus 9y square, and then x square is equal to 9y square minus 1 upon x square, means multiply by the minus sign and then divide by x square. Oh sorry, y square. Now how to find? अब जिसमें बता चुके हैं कि y should be greater than 0, यहां भी लेंगे y should be greater than 0. अब ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है, ये पूरा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये तो पता ही है कि इट इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये भी हमारा 9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अभी कंडीशन एक वो चलती रहेगी जो हमने y इज ग्रेटर देन 0 लिया, यानी इक्वल टू नहीं ले सकते हैं. अब ये y स्क्वायर इज पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं. 9y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अगर ये पॉजिटिव ना होती, सिंगल y होता, वी कैन नॉट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ फैक्टराइज दिस वन. तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3y माइनस 1 एंड 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. Then y you will get the two values, एक minus 1 by 3, but the condition is greater than or equal to 0. तो y is greater than or equal to 1 by 3 जो हमने बताई थी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि वो कंडीशन लेंगे, एंड y is less than or equal to, बड़ी वैल्यू से बड़े, एंड लेस देन बाय स्मॉलर वैल्यू. तो what you will get the range of the function will be 1 by 3 to infinity, like this, and this sign, and union less than or equal to minus 1 by 3, तो minus 1 by 3 से minus infinity. लेकिन आपको पता है कि y is greater than 0, तो हम greater than 0 वाला ही नंबर लेंगे, मीन्स 1 by 3 से infinity तक. तो यानी कि you will not write the negative values. तो 1 by 3 to infinity is the range of the function. So using this you can find the value of range and domain of the function of square root function. The next type of if you have the modulus function, ये type 5 होगा. modulus function मतलब always positive. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव y इज इक्वल टू mod x, जैसे ये है, तो x की कोई भी वैल्यू अंदर रखें ये हमेशा पॉजिटिव देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम -3 रखते हैं तो 3 देगा, -2 रखते हैं तब भी -2 देगा, बट इफ यू पुट द 2 देन इट विल गिव 2. पॉजिटिव है ये, तो ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू. लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर वेरिएबल के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए, तो अगर x इज लेस देन 0, कहीं भी लिखा है mod x, अब mod x को हमें हटाना है, तो देयर आर 2 केसेस. इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो mod x इज इक्वल टू x हो जाता है, mod अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो पॉजिटिव आना ही आना है. बट द सेकेंड केस इफ x इज लेस देन 0, जैसे हमने निगेटिव वैल्यू इसके अंदर रखी और mod x को हटाना, तो ये पॉजिटिव कब आएगा, -x रखेंगे. क्यों, अभी ये कंफ्यूजन नहीं हो,
देखिए -3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ये 3 क्या है, माइनस में है, ये x हो गया, x की वैल्यू लेस देन 0, यानी x इज इक्वल टू -3, तब ये पॉजिटिव आया। अगर हम यहां पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो -3 ही तो आएगा, इसलिए एक माइनस साइन फार्मूले गए एंड देन द वैल्यू ऑफ x इज -3, इट विल गिव द पॉजिटिव। तो दिस इज द वे, देयर आर टू कंडीशन ऑलवेज इन द मॉडुलस फंक्शन। तो इसी चीज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द फाइंड द रेंज एंड द डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, जैसे इसी का निकालना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द दिस फंक्शन, तो व्हाट यू विल डू, द डोमेन विल बी x की कोई भी वैल्यू रखें, क्या कभी ये इंफिनिटी देगा या नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी वैल्यू, तो नहीं देगा। डोमेन ऑफ मॉड x इज ऑलवेज रियल नंबर, यानी df हम लिख सकते हैं r के बराबर, कोई भी वैल्यू रख दो वो आएगा ही आएगा, एक रियल वैल्यू ही आएगी। बट फॉर रेंज, रेंज क्या होगी, अभी हमने बताया कि ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, चाहे हम x की वैल्यू निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें। इट मींस द रेंज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू 0, दिस इज द रेंज बिकॉज इट इज ए मॉडुलस फंक्शन। लेकिन अगर मॉडुलस फंक्शन के साथ में कुछ और लिखा हो, जैसे x के साथ, भाई ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसके बारे में बताया, फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन यू विल गेट दिस। बट इफ यू हैव द फंक्शन लाइक दिस, सपोज y is equal to 2 minus mod x plus 2, अब ये जैसे है 2 minus mod x plus 2, in this case what you will get, the domain, अब डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x की किसी भी वैल्यू पे यदि इंफिनिटी देता है उसको छोड़ के बाकी सब ले लेंगे, बट विल यू गेट द इंफिनिटी और इमेजिनरी, नो, बिकॉज x की कोई भी, ये डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, जब डिनोमिनेटर में नहीं हो तो x की वैल्यू इंफिनिटी हो ही नहीं सकती पूरी वैल्यू, तो दैट इज व्हाई द डोमेन इज रियल नंबर। बट फॉर रेंज, रेंज क्या है कि हमें रेंज अब दिखानी ये पड़ेगी कि यहाँ पे ये वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ही होगी, किसी भी वैल्यू पे ये, जैसे x की वैल्यू -2 रखा तो -2 + 2 0 हुआ, x की वैल्यू -3 रखा तो -3 + 2 कितना हुआ, -1, लेकिन -1 चूंकि मॉड के अंदर है तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 1, तो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम 0। अब हम 2 से उस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी हम नीचे किस तरफ चल रहे हैं, लेस देन, यानी लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू नीचे अगर चली जाएगी तो ये निगेटिव में आ जाएगी, तो द RF इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम, अगर ये मिनिमम 0 है, इससे नीचे हो नहीं सकती है, ठीक है, तो -0 तो 2, इसकी 2 से क्या ऊपर वैल्यू हो सकती है फिर कभी, अगर हम यहाँ 1 मतलब कि 0 मिनिमम है, मिनिमम यानी अगर हम -1 नहीं आएगी पूरा मिला करके, तो इसका मतलब कि 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और 2 से हमेशा ये इंफिनिटी की ओर जाएगा ऐसे, दिस इज द वैल्यू। तो हाउ विल यू राइट, दैट इज द, फॉर एग्जांपल the x plus 2, mod x plus 2 is always greater than or equal to 0, so the minimum value of x plus 2 is 0, okay, therefore to maximum, this is the maximum value of 2 minus x plus 2 is 2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, सो रेंज विल बी 2 से -infinity, by this way you can find. So in the next video I will teach the other types of the function in which you can find the domain and range, and because from today especially for my school, where this is the summer vacation begins, therefore I will send the video from
tomorrow onwards in my YouTube channel Study Bright. So you can open channel and then you can see the whatever I'm going to explain through the video. Thank you.